हेलो। हेलो। हेलो गाइस, कमेंट करो कहाँ से देख रही हो। यस, जोहान पेगो, गुड आफ्टरनून। सो बाय, शेयर कर दो सेशन को, हम शुरू करने वाले हैं। हेलो 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 हेलो, शेयर कर दो सेशन को, ठीक है जी। हाय जोहान। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ गया, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को,
ठीक है जी. हाँ Johan, good afternoon. How are you? So क्वेश्चन नंबर वन से हम शुरू करते हैं. सो यहाँ पर लिखा है he found it. Johan, my voice is clear and the video is clear or not? Please let me know in the comment section. Okay, now right now. So the first question, okay, he found it. Here is the question. He found it in English brick and left it marble. Remark one great. Okay, thank you. One great writer on another. Who are they? So यहाँ पर पूछा गया है he found it English brick and left it marble. Remark one great writer on another. Who were they? So if you know the correct answer, let me know in the comment section. Okay, comment section में बता दो कि आप करेक्ट आंसर को पहचान पाएंगे. सो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जोहान भाई, उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मिल्टन ऑन शेक्सपियर. ऑप्शन नंबर बी ड्राइडेन एंड मिल्टन. ऑप्शन नंबर सी जॉनसन एंड ड्राइडेन. ऑप्शन नंबर डी जॉनसन ऑन शेक्सपियर. तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा वाला लग रहा है? कमेंट करके बताइए. हाँ, करेक्ट आंसर कौन सा वाला लग रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का? ओके, so the correct one is Johnson and Dryden. Okay, so the correct answer is Johnson and Dryden. So that is the one correct answer for this question. Okay, so just 1 second. Okay, just I want to share this link to another participant guys here. 1 second. Okay Johan, 1 second, just give me a minute. Sorry, 1 second. One second. हाँ, ओके. सो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके बारे में आगे चलते हैं. सो which of the following statements about Christopher Marlowe true? Okay, that is the question number 2. That is asking about which of the following statements is about Christopher Marlowe are true. Okay, so there is the statement number 1. Edward II was written in the last year of Marlowe's life. Option number 2. Many critics consider Dr. Faustus to be Marlowe's best play. And option number 3. His Spanish tragedy comes a close second. Okay, so करेक्ट आंसर कौन सा वाला लग रहा है बताइए. ऑप्शन नंबर ए बोलता है ए एंड 2 आर द ट्रू. ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 आर ट्रू. देन ऑप्शन नंबर सी 2 and 4 आर ट्रू. एंड ऑप्शन नंबर डी बोलता है 3 and 4 आर ट्रू. जो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको अच्छा लग रहा है बताइए, कौन सा वाला करेक्ट होगा? हाँ जोहान बताइए. ओके, Johan say about that. I think you have already selected the correct answer. Okay, so okay. Now
let's see. Thank you, bro. You are watching my live here. Okay, so thank you so much, first of all. Then, okay, 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 bro. हम क्वेश्चन नंबर 2 का अभी करेक्ट आंसर बता देते हैं क्या होगा, ठीक है। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर, here is the some problem, sorry for that. uh, Basically the problem, you know, 1 second, हाँ, प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लो। हाँ हाँ हाँ, अपने आप में ठीक हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस जोहान। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 2, the correct answer is 1 and 2 are true. That means Edward 2 was written in the last year of the Marlowe's life, and option number 2, many critics consider Dr. Postas is Marlowe's best play. Right? Yes, yes, exactly. That is the one correct answer for this question. Okay, so if I wrong analysis here, just me clarify that. Okay, Johan. So now let's go to the question number 3. Okay, here is the question number 3. Mm, which of the following is not a Raven's tragedy? Which of the following is not a Raven's tragedy? So here is the lots of options are given here: Hamlet, the Duchess of Malfi, Bolpone, and the Gorboda. So you can see here, okay, जो यहाँ पर एक लगाया गया है नोट, उस पर फोकस करना है। जो लिखते हैं ना नोट, who is among the following is not a revenge tragedy? रेवेंस ट्रेजेडी नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा हेमलेट तो रेवेंस हो गया, हाँ, दूसरे सो मालवी तो रेवेंस हो गया, गोरबोदाक भी रेवेंस हो गया। लेकिन आप जो if you thinking about that the revenge tragedy, if you not focusing on the keyword, okay, in the note, so definitely you can select the wrong answer. Okay, so here the correct one is Bolpone, right? Because that's a comedy, right? Then question number 4, here is the question number 4. uh, what is neologism? Okay, so this question asked by the, and I think that that's a very repetitive questions by the university in every year, not every year asked, but sometimes. Neologism. So option number A word with roots in native language. Option number B, a word whose meaning changes with every renewed use. And option number C, a word newly coined. Yeah, here's the correct one answer. Option number C, about neologism. Okay, so because there a word newly coined or used a new sense, that's called neologism. Okay, so you need to remember this because sometimes asks about the enhance the following like that. Okay, so here the question number 5. After that, you have seen how a man was made a slave. You shall see how a slave was made a man. Okay, so what is this actually? mm, you have seen how a man was made a slave. You shall see how a slave was a man. So is an example of option number A, Betus, and here epistrophe, and here's chiasma. So the correct answer is option number C. Okay, that's the correct one answer for this question. Okay, uh now let's, here Johan, option number C, no problem. Okay Johan, thank you, thank you, thank you, thank you, bro.
So yeah, so come here, question number 6. In a poem, a line may either be an stop. So that is option number 1, rhymed. Option number B, broken. Option number C, accented. Option number D, run on. Yeah, so that is the correct one answer. Here already selected. Okay. Yeah. So now come to the question number 7. Here is the question number 7. Locke's essay concerning human understanding is a classic statement of. Yeah, here is the correct answer is empiricist philosophy. Okay, that is the one correct answer for this question. And here, question number 8. The press Dark Satanic Mills has become the most famous description of the force of the center of the Industrial Revolution. The press was used by. Here's the directly William Blake. Okay, Dark Satanic Mills. You need to remember this press only. No need to remember all these things. Okay. So always कीवर्ड को याद रखना होता है तभी आंसर करना बहुत आसान हो जाता है. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following was the major characteristics of Renaissance? Yeah. Option number B is the correct answer. Humanism. Okay. बोलते हैं ना Renaissance humanism. Right. Now, question number 10. Samuel Taylor Coleridge, in his work Biographia Literaria, examines Spencer to be. Yeah, so that's very, create some dilemmas, this question. Here is Samuel Taylor Coleridge, in his book Biographia Literaria, examines Spencer to be a. It's directly mechanical, right? That's the correct one answer for this question. Mechanical. It's not audiovisual, not psychoanalytical. It's directly mechanical. Okay. So question number 11. Aristotle catharsis is interpreted as. Yeah, already selected here the correct answer. Purgation. Right. Now, question number 12. Which of the following era is the backdrop of the novel A Tale of Two Cities? Okay. वैसे कमेंट करके बताइए ए टेल ऑफ टू सिटीज किसने लिखा है ना, किसने लिखा था. सो द करेक्ट आंसर इज द फ्रांस रिवॉल्यूशन. ठीक है, बट आपको उसको भी पता करके जाना है. कभी कभी क्रोनोलॉजी में पूछ दिया जाता है मैथ्स द फॉलोइंग करके. ओके, इसीलिए आपको ए टेल ऑफ टू सिटीज किसने लिखा है उसको भी पता करना है. हाँ जुहान भाई कमेंट करो किसने लिखा है ए टेल ऑफ टू सिटीज. So now let's go to the next question. Here's the next question. Everyman is a perfect example of which type of play? Right. So Everyman is a perfect example of which type of play? That's a morality play. Okay. So if you know what called the morality play and their characteristics, if you know, just let me know in the comment section. Okay. Yeah. And here I would like to say that interlude is a short. Okay, that is a short play. Okay. Yeah, so you need to remember these things. Okay, when you read this only one question, you can remember these all options. Okay, it should be better for your deeper understanding, I think that. And question number 14. The epic Paradise Lost follows a work as is ship model, which is the one. Okay, so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? Virgilis Aeneid. Okay, option number A টো হ'ব ইয়াৰ correct answer. Okay, Johan, thank you তোমালৈ, তুমি ডিকেন্সি লিখিছে বুলি দিছা. Thank you. So question number 15. Which of the following thinker of the English Enlightenment era work towards the granting complete economic freedom for national development? So what is the correct answer?
Here's directly Adam Smith. Okay. কিছুমান কুৱেশ্যন এনেকুৱা হয় মানে একদম বুজিব নোৱাৰা হৈ যায় হা, জাষ্ট ৰিপিটটো কেতিয়াও নহ'ব, কিন্তু জাষ্ট টুক্কা মাৰি কৰিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে ভালকৈ পঢ়ি ল'লে ভাল। ইয়াত লিখা আছে, which of the following thinker of the Enlightenment era worked towards the granting of complete economic freedom, national development? Adam Smith. Okay. So question number 16. Here's the question number 16. Which character in genre religion to justify cruelty? Okay, religion to justify cruelty. So I have already selected the correct answer, Mr. Brocklehurst. Right, this is the correct one answer for this question. And here question number 17. Okay. Here one second, just here some problem, bro. Okay, so here the question number 17. With Bacon, the essay form. With Bacon, the essay form. The correct answer is the aphoristic expression of accumulated with public wisdom. Okay, so the with Bacon's essay form is Bacon's essay form is an aphoristic expression of accumulated with public wisdom. ঠিক আছে, so ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ব question number 18. Which of the following statement was the first thinker of the 18th century to apply the ideas of the Enlightenment, explain the condition of women? So Mary Wollstonecraft. ঠিক আছে, so এতিয়া জোহান কমেন্ট কৰি কোৱা মানে Mary Wollstonecraft কোনকিটা ৱৰ্ক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ওকে, যোনকিটা এক্সামত আহি গৈছে তুমি জানা যদি কমেন্ট কৰা হা। so ইয়াৰ এটা ৱৰ্ক আছে এভিন্ডিকেশ্যন টু দ্য ৰাইটছ অফ ওমেন্স, so এইটো কিমান চনত পাব্লিছ হৈছিলে, so এনেকুৱা সুধিব পাৰে। ঠিক আছে, now question number 19. Here the question number 19. The first anthology of poems published by the Images Poets 1914 is called. So Images Poets ইয়াত কোন কোন আছিলে সেইকিটাকো জানি থব লাগে হা। so কেতিয়াবা মানে ইউনিভাৰ্চিটি উইথ ব্লুমছবুৰি গ্ৰুপ এনেকৈ দি দিয়ে, তেতিয়া ইজি হৈ যায় কৰিবলৈ। so 1914 is called Des Images. This is the correct one answer. Okay, the first anthology poems published by the Images Poets 1914 was called Des Images. Yeah. Next question, question number 20. Here, which of the following is an example of the surrealist art that is designed to give impression of free-moving unconscious? Okay, so surrealist to যিটো মুভমেণ্ট ন সেইটো কাৰ লগত জড়িত সেইটোকো জানিব লাগে, প্লাছ মানে ফ্ৰী মুভিং আনকনচিয়াছ। অ'কে, আনকনচিয়াছ বিকামছ বেইং অনলি ইনটু লেংগুৱেজ, চ' সেইটো কোনে কৈছিলে, জেক্স লাছনে। ঠিক আছে, চ' আনকনচিয়াছ বুলি ক'লে আৰু লাখানৰ ফটাটো মনত আহিব লাগে হা। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব দ্য পাৰ্জিষ্টেন্স অফ মেমৰি। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এন এক্সাম্পল অফ দ্য সাৰিয়েলিষ্ট আৰ্ট দ্যাট ইজ দ্য ডিজাইন টু গিভ an impression of the freedom moving unconscious, the persistence of memory. That is the correct one answer for this question. So question number 21. Here are 21. Which of the following statements is about the lyrical ballad is not true? Okay, so ইয়াত statement দিয়া আছে যোনটো মানে not true. Okay, not true focus কৰিব লাগে, যদি true to ভাবি কৰি দিয়া answer wrong হৈ যায়। so not true কৈছে যেতিয়া নেকি it carried only ballad proper whose color is the rhyme of the ancient mariner, true. okay, so itu true হোৱাৰ কাৰণে correct answer টো নহব। then the option number B, it's also carried pastoral and other poems, it is also true. and 1800, right, so not true, correct answer option number D. That means it's also printed from Grace elegy written on a country church here. ঠিক আছে,
So এতিয়া কমেন্ট কৰি কোৱা যে গ্ৰে ওকে গ্ৰেছ এলিজি ৰিটেন ইন এ কাউন্ট্ৰী চাৰ্চ ইয়াৰ ইয়াৰ ওপেনিং লাইনটো কি আছিল কেতিয়াবা এনেকৈ সুধি দিয়ে যে ইয়াৰ এলিজি ৰিটেন ইন কাউন্ট্ৰী চাৰ্চ ইয়াৰ ওপেনিং লাইনটো কি আছিল ঠিক আছে so next question number 22 here is the 22 which of the following work of Milton is critic censorship okay Milton critic censorship so the correct one answer is Areopagitica. Then the next question number 23 here's the 23 identify the right chronological sequences of the following Shakespearean tragedies so chronologically arrange koribo lage Shakespearean tragedy so here is the correct one answer Hamlet Othello King Lear Macbeth ঠিক আছে Hamlet Othello King Lear Macbeth ঠিক আছে so ইয়াৰ important character কেটা জানি থব লাগে Hamletor কোনখিনি important character আছিলে আৰু কিমান চনত পাবলিশ হৈছিলে প্লাস yeah এইবিলাক next question number 24 here is the 24 which of the following plays is written by P.B. Shelley okay written by P.B. Shelley এটো মানে চাব লাগে হদায় রিটেন বুলি দিছে ইয়াৰ ন কিন্তু নট রিটেন বুলি কলে দিগদাৰ আছে মানে হেকাৰণে হদায় প্ৰশ্নটো ভালকে চাব লাগে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব which of the following plays written by P.B. Shelley yeah so correct answer to হ'ব Das NG then question number 25 through with the is nature to advantage test what oath was taught but never so well expressed that this expression epitomizes the essence of the poetry is the neoclassicalism okay so jodi ইয়াত মানে wrong explanation হয় তুমি লগে লগে কমেন্ট কৰি জনাই দিবা হা ঠিক আছে জোহান ঠিক আছে so question number 26 here is the question number 26 জোহান অকমান শেয়াৰ কৰি দিয়াত হা তুমি কাৰণ সকলোৱে গম পাব লাগিব ন অকল তুমিয়ে চালে নহব question number 26 select the matching pair yeah so ইয়াত কোনটো মানে ম্যাচ কৰে হেতু সিলেক্ট কৰি দিলেই হল যোনটো ম্যাচ নকৰে হেতু তোমাৰ হ'ব wrong answer okay যোনটো হ'ব ম্যাচ হ'ব হেতুই হ'ব correct answer so Mary Wollstonecraft Maria this is the matching with these two other so that's why that's the one correct answer for this question okay get it so now let's question number 27 here is the 27th question Thackeray's novel Vanity Fair okay has the following subtitle so যেটো উইলিয়াম ম্যাককিস থাকুরের ভ্যানিটি ফেয়ার তো আছিলে ওকে এটো বহুত এটা বিখ্যাত আছিলে সো ইয়ার সাবটাইটেল তো কি আছিলে জানা যদি কোৱা জোহান কোনটো অপশন হ'ব জলদি কোৱা হ্যালো সো ইয়ার কারেক্ট আনসার তো হ'ব you know this the correct one answer is option number D that means a novel without a hero okay this is the subtitle of the Vanity Fair and yeah that's important to you কম সে কম মানে 10টা 15টা কিতাপ আৰু ইয়াৰ সাবটাইটেলটো পাবলিশ কৰাটো চাই যাব হা question number 28 কি কৈছে and we are here as has darkling plain so এই কিতাপ বাদ দিব লাগে কিতাপ পঢ়িব না লাগে হা ডাইৰেক্ট তুমি বাইব লাগে only darkling plain so ইয়াত কোৰকটা কৈছে ডাবল বেস yeah simple কাৰণ তুমি যদি ইমান দিগলিয়াকে মুখস্থ কৰিবলৈ কোৱেশ্যনটো যোৱা তেতিয়া তোমাৰ বহুত টাইম যাব ডাইৰেক্ট darkling plain keyword ডাবল বেস right that's the shortcut so question number 29 the rhyme scheme of Shakespearean sonnet what is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet A B A B C D C D E A B F G G G G that is the correct one answer okay A B A B C D C D E A B F G G G G right so that's last if you know just comment me okay what is the A B A B C D C D E A B F G G G G I think that these two lines are called couplet okay
and if I'm not wrong. So question number 30. The colony in Antigua is referred to which of the following novel? Which of the following novel? Mansfield Park. ঠিক আছে? So Mansfield Park to কোনে লিখিছিলে? কমেন্ট কৰা প্লিজ, জলদি কমেন্ট কৰা। কমেন্ট নকৰালৈকে এইটো আগ নাবাঢ়িব সেশনটো। জলদি কমেন্ট কৰা। কোনে লিখিছিলে? The colony in Antigua. ওকে ঠিক আছে, একো নাই বাৰু, পিছত ক'লে হ'ব। কলনি ইন এন্টিগুয়া কোনে লিখিছিলে? সৰি, মেনছফিল্ড পাৰ্কটো কোনে লিখিছিলে? So next question. Which romantic poet coined the famous phrase "sports of time"? Yeah. So you need to remember maximum "Sports of Time", that is by William Wordsworth, right? That is the correct one answer for this question. So Johan say that I request you conclude the session from the question 30 next class provide. So okay, here I provide only remaining, no bro, sorry, I need to provide here 100 question. Okay, yeah, in this session. So question number now 32. Here's the 32. Select the correct author work and their combination of the following. Okay, here is the arrange chronologically. ইয়াত হ'ব তোমাৰ হেমলেট, শেক্সপিয়াৰ হেমলেট, জৰ্জি বাৰ্নাৰ্ড শ্বো পিগমেলিয়ন, চাৰ্লট স্মিথ, অৰফেন এণ্ড দ্য কেষ্টেল, এমিলি অফে, ফাদাৰ এণ্ড দ্য ডটাৰ। অ'কে, চ' যদি ইয়াত ক'ৰবাত খেলি মেলি লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব হা। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 33, it is the 33. They are asking about the neoclassical age is also called the Augustan age, because why is called also Augustan age? Neoclassical is also called the Augustan age. So what is the main reason? Oh yeah, এইটো দীঘলীয়া সেশন, কাৰণ এতিয়া এন্ট্ৰেন্সৰ টাইম আহি গৈছে ন, সেইকাৰণে এইটো দীঘল হ'ব। So the neoclassical is also called the Augustan age is because তুমি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া হা, অকলে নাচাবা, লগৰকেইটা চাব লাগিব ন। ঠিক আছে, আৰু মোক ছাৰ বুলি নামাতিবা, বাইটি নামাতে নে যি মাতিবা, কিন্তু জাষ্ট মানে মনৰ ৰাখা হা, যি চাইছে। So the neoclassical is also called the Augustan age because why? Because the English writers imitated the Roman writers during this period. Yes, exactly. But মনত ৰাখিবা হা, কুৱেশ্যন সদায় একজেক্টলি নাহে, এজ ইট ইজ অপশ্যন কে সাথ তুমি অকণমান নিজে জানিব লাগিব। So question number 34. Here is the 34. তোমাৰ জোহান, তুমি তোমাৰ লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া হা, টংকু যোন আছে। The concept of human mind, tabula rasa, okay, tabula rasa is propounded by, so that's by John Locke. That's very simple. Tabula rasa, John Locke. Okay, that's very easy. And question number 35. Okay, here's the 35. Angel in the House. Okay, in Angel in the House became common level for Victorian ideal of the respectable middle class femininity. The press originated the popular long poem Coventry Petmore. So ইয়াত মানে ইমান দীঘলকে এইবিলাক দৰকাৰ নাই, জাষ্ট Angel in the House, Coventry Petmore, ঠিক আছে, এনেকে মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল। Then question number 36. In Beckett's Waiting for Godot, which character has 2 pages unpunctuated space? Question number C, Lucky. That is the one correct answer for this question. And here question number 37.
এনেকুৱা কুৱেশ্যন বিলাক সলভ কৰিবলৈ বহুত ইজি, কিন্তু অকমান দিমাগটো কটাৰে হৈ গ'ল মানে হা, বহুত ইজি। সো কৰি চোৱা, কোনোবাই ট্ৰাই কৰি চোৱা লেভেল, এইটো মই তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰা নাই, এতিয়া পাৰিবা কোনটো কেনেকৈ মিটছ হ'ব কমেণ্ট কৰি জনোৱা, কাৰণ মই স্ক্ৰল ডাউন কৰা নাই এনচাৰটো এতিয়ালৈকে হা। পালে পয়াৰ কোনে লিখিছে, দ্য সন এণ্ড দ্য ফিউৰি কোনে লিখিছে, ৰ'ছেন ক্ৰেজেন গিল্ডাষ্ট্ৰান্স আৰ ডেড টো কোনে লিখিছে, আণ্ডাৰ দ্য গ্ৰীণ উড ট্ৰী কোনে লিখিছে, এণ্ড দ্য কেক্স অফ ভেনেল। So one thing I need to clarify you that this sessions is not only for helpful subject, okay, not only things like that, because this also helpful for your step is if you want to go for UGC NET and SET examination, okay, yeah. So English literature का जो क्वेश्चन पेपर होता है सबके लिए होता है, ठीक है। So आपको पता लगा, आइडिया है तो बताइए किसने लिखा है, पाले पॉयर को किसने लिखा है, सॉन एंड द फ्यूरी को किसने लिखा है। सो बहुत इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो मैं बताता हूँ यहाँ पर। सो द पाले पॉयर इज रिटन बाय व्लादिमीर नेबकोव, दैट मीन्स A1E। सॉन एंड द फ्यूरी दैट्स बाय रिटन बाय विलियम पैकनर, अमेरिकन लिटरेचर। 2C, रोसेंट्रेंस एंड गिल्डस्ट्रांस आर नॉट डेड। सो अंडर द ग्रीनवुड ट्री आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 2C and AE এতিয়া মেথছ কৰি লম ক'ত আছে হা। সেকেন্ড দ্য সন এণ্ড দ্য ফিউৰি উইলিয়াম পাকনাৰ, ডেট মিনছ 2C ক'ত আছে চাই লওঁ আমি। ইয়াত 2C হা পাই গ'লো, ঠিক আছে। সো য়েছ, সো ইয়াত 2C আছে, ইয়াত 2 চোৱা হা, 2 ইয়াত, C ইয়াত অকল এটা অপশ্যনত আছে। That's why the correct answer is option number C। সেইকাৰণে মানে কৈ দিছোঁ, আপুনি সবটো জানিব দৰকাৰ নাই হা। সো এতিয়া চোৱা, একটাৰ পৰা কেনেকৈ সবটো সলভ কৰিলোঁ, ঠিক আছে। সো এইটো মানে বুজি ল'ব সমান। দ্য সন এণ্ড দ্য ফিউৰি বাই উইলিয়াম পাকনাৰ আমি জানিলোঁ, ডাইৰেক্ট আহিলোঁ মানে 2 ক'ত মেটচ আছে পাই গ'লোঁ, দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। সো এনেকুৱা কৰিলে বহুত ভাল। এতিয়া চাব পৰা কোনে কি লিখিছে। Then here is the list, okay. Palle Pyer, Vladimir Nabokov, Son and the Fury, William Faulkner. Then the Rosencrantz and Guildenstern, 3D, okay. Tom Stoppard, and Under the Greenwood Tree, option number 4. Option number 4 is Thomas Hardy, and 5B, that means the Somerset Maugham, that's why of cakes and okay, that's very easy. জোহান তুমি কৰ হয় কমেণ্ট কৰি জনোৱা এবাৰ। সো তুমি অতনিৰ পৰা চাই আছা কাৰণ মোৰ সেশনটো, okay. So one of the following category tells it in the prose identifier. So one of the following category tells is the prose identifier. The correct answer is the person is tell, right. So the next question, here is the next question. Question number 39. Okay. In 1922 remarkable of the following significance publication. So 1922 চনত কিমানখিনি পাব্লিকেশ্যন হৈছে। Oh my god, লিষ্টটো চালে এনেকুৱা লাগে ন, কিমানখিনি পাব্লিছ হৈছে চোৱা। সো এইটো আমি ক্ৰনলজিকেলি এৰেঞ্জ কৰি দিব লাগে। ফাৰ্ষ্টত এলিয়ট, দ্য ৱেষ্টলেণ্ড, ঠিক আছে। ওকে জোহান ধেমাজি, ঠিক আছে জোহান, ঠিক আছে। সো হিয়াৰ okay Johan, ঠিক আছে। Eliot, the Wasteland, and Joyce, Ulysses, and Lawrence, Fantasia of the Unconscious, and Wolf, Jacob's Room. Okay. And the next question, question number 40. Here is the question number 40. William Wood showed his statement purpose of publication of the lyrical ballads. So the purpose of the publication of the lyrical ballads carries of the following complete sentence, complete phrase करेंगे। ओके, लिरिकल बallad आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आपका CUET PG का हो
यह है आपका यूजीसी नेट का हो, उसको करके ही जाना है, ठीक है। वो उसको पूछा जाता है। यू कैन से फेवरेट टॉपिक ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, ओके। So the correct answer is here, a selection of language really used by men. হেতুকে কৈছিলে উইলিয়াম উডছলে, হেতুকে কৈছিলে যে ভাষাটো আমি ৰিয়েলি এটা চিম্পল মেনৰ দৰে ব্যৱহাৰ, চিম্পল মানুহৰ দৰে বা চিম্পলকে পেষ্টৰেল লেংগুৱেজ ইউজ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। কিন্তু ইটস ইউ নো গাইজ ভেৰি কনফিউজিং, sometimes ask questions you are very confusing, okay, that's why always carefully select, okay, when you tick mark. And here's the next one, question number 41. Question number 41 here. The future of poetry is immense because poetry our rack time goes. We will find an surreality. This clean poetry man acknowledge the study of poetry. Acknowledge the study of poetry. So hetu এইবিলাক গুৰি গুৰি ৰাখিব দৰকাৰ নাই, জানি অনলি জানিব লাগে the future of poetry হৈ গল by Arnold. Arnold study of poetry. The future of poetry is image of poetry. Okay, ইমান জানিলে হৈ গল, বেছি জানিব দৰকাৰ নাই, বেছি জানিলে মাথা এগুলো হৈ যায়। Question number 42. Okay, so here is the 42. That's that's very favorite questions. So Victorian age, Queen Victoria reign 1837-1901, exactly, why not? এতিয়া তুমি কমেন্ট কৰি কোৱা, মানে ভিক্টোৰিয়ান এজৰ আগত কোনটো এজ আছিলে, জলদি কোৱা। জোহান পেগু, যদি তুমি আছা কোৱা হা, লাইভত আছা। কুইন, sorry for that. So কুইন ভিক্টোৰিয়া reign in 1837-1901, ইয়াৰ আগত কোনটো এজ আছিলে? কোৱা কোনটো এজ আছিলে? 1837-1901 ভিক্টোৰিয়ান এজ, ইয়াৰ আগত কোনটো আছিলে? ওকে, তুমি ক'বা বুলি মই ভাবিলো, কিন্তু আৰু এটা প্ৰশ্ন, সো এনেকৈ সুধিব পাৰে যে why Victorian age is also called the golden age of English literature, because at that time lots of novel are popularity, majority. If you see in the Anglo-Saxon period how the poetry are dominant at that particular time, so like that here in this period Queen Victoria, here Victorian is lots of writer are there. You can say Charlotte Bronte, Anne Bronte, yeah, lots of prominent writers are here and they write lots of popularity novel by Jane Eyre, right? So these all are come to the golden age of English literature in the Victorian age, 1837-1901. Okay, yeah, the Victoria, okay, yeah, 1837-1901, the Queen Victoria reign. So here Johanne কৈছে 1789, ঠিক আছে, so the romantic period, okay. Exactly romantic period. So romantic period আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ চেলি আছিলে ন। So the next question, here's the next question. The shadow line, okay, the shadow line is a novel by, so shadow line কোনে লিখিছে? So তোমালোকে exactly I think that এইটো B.Ed পঢ়ি আছা, ডিগ্ৰী ইউজিত, ঠিক আছে। So ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব অমিতাভ ঘোষ, ঠিক আছে স্যার। So অমিতাভ ঘোষে দা শ্যাডো লাইন্সটো লিখিছিলে। So কেতিয়াবা এনেকৈ আহে যে অমিতাভ ঘোষৰ যিমানখিনি ৱৰ্ক আছে সেইবিলাক ক্ৰনলজিকেলি এৰেঞ্জ কৰিব আহিব পাৰে, ঠিক আছে। কিন্তু এইকেইটা ৰাজা ৰাও আৰু উইলিয়াম গোল্ডিং, জোচেফ কনৰেড, এইকেইটাকো নেগলেক্ট নকৰিবা হা, এইকেইটা আহিব পাৰে, চাই যাবা যিমান পাৰে। So next question number 44. The Puritans shut down, okay, here the Puritans shut down theater in England, ঠিক আছে। So yes, Keith Shelley Wordsworth Coleridge, exactly, yeah Johan, you are right bro, okay, I am appreciate to you.
ঠিক আছে so the Puritans shut down all theaters in England. So the Puritans shut down all theaters in England. Correct answer is 1642, right? 1642. Now next question. Here's the next question. uh which of the following statement waiting for Godot is not true? Option number 4, it doesn't carry a subtitle, right? Because it's not true কৈছে, not true to লিখিব লাগিব না, true to লিখি দিলে নহব, right? So it carries a subtitle, tragicomedy, 2 parts, right? Exactly. So that's why the not to focus কৰিব লাগে, not কৈছে সেইকাৰণে হেতু কাৰেক্ট আনসাৰটো 4 হ'ব, কাৰণ সাবটাইটেল আছিল ইয়াত এখন আছিল কৈছে হা। যদি মই কিবা ৰং কৈছো কমেন্ট কৰি জনাব। So question number 46, have more than thou sowest, have more than thou sowest, speak less than thou knowest. Okay, so King Lear, this lines spoken by, okay, that is by King Lear. King Lear answer to ইয়াতে লুকাই আছে ঠিক আছে। So next question, okay, publication of Waiting for Godot, tell me okay, so publication of Waiting for Godot, I think that 52, but before 19 yeah, so I'm not exactly don't say, okay, so next, extremely sorry next question, question number 47 question number 47, here's the 47. Philip Sidney's Strophen in Stella was the first sonnet sequences in English, right? So that's the correct one answer. Philip Sidney's Strophen in Stella was the first sonnet sequences in English, right? सोनेट के बारे में बताइए जोहान, सोनेट के बारे में बताइए। सोनेट पार्स ने किसने लिखी थी? शेक्सपियर का सोनेट कितना है उसको भी बताइए, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाते हैं। सोनेट वी नो एवरीथिंग दैट that's the 14 line iambic pentameter lines, right? That's the sonnet. And here question number 48, restoration comedy, yeah, restoration comedy, also known as comedy of humors, comedy of manners, anti-sentimental comedy, and the dark comedy. So Johan, so restoration comedy is also known as what? Comment me guys please if you know the answer. Okay, so restoration comedy, comedy of humor, comedy of manners, anti-sentimental comedy, and the dark comedy. ঠিক আছে, কি হ'ব correct answer to? Okay, Johane কৈছে 1952. Okay, so the publication of Waiting for Godot. Thank you Johan for your answer. So the restoration comedy is also known as what? If you know the correct answer, you can comment me A, B, C, D. Anything else? Yeah, Johan. So restoration comedy is also called the comedy of what? Comedy of humor, comedy of manners, and the sentimental comedy and dark comedy. No that is the wrong answer. Okay, so Johan ने दिया है A wrong answer है, A भी wrong answer है, A भी wrong answer है। जो आपका सही होगा comedy of manners. Okay, that is the restoration comedy, also called say the comedy of manners, right? So that is the correct one answer for this question. So what is the restoration basically? What is the restoration comedy? Comedy means we all know about the pun, funny, okay, enjoy, that's the comedy. But what is restoration? Okay, what kinds of things comes to your subconscious mind when you heard the word restoration? At that time, restore all things, theater, okay. So at that time, no district people, उन लोग जैसे चाहते हैं उसको ही उसका लाइफ को एंजॉय करके जिया करती थी। ओके, जो स्ट्रिक्ट था उसके आगे
लेकिन जब रेस्टोरेशन आया तो सब कुछ रेस्टोर हो गया, थिएटर भी ओपन हो गया इंग्लैंड पर, ठीक है। सो हेतुए कारणे यार करेक्ट आंसर तो होबो कमेडी ऑफ मैनर्स। ओके, रेस्टोरेशन कमेडी also known as comedy of manners, right? So question number 49, here's the 49. If they be two, they are two, so as step twin compasses are true, the soul the fixed foot makes so to move but dot if the other do, these lines which poetic device convey the meaning. Okay, so তুমি জানা যদি কারেক্ট আনসারটো কৰা, ওকে, ঠিক আছে, if they do be and are to so, as if still compasses to the soul of the fixed foot, moved stiff order, these lines which poetic use convey of meaning. Number 1 pathetic fallacy, number B transfer epithet, number C metaphysical conceit, number D person notification. কিন্তু হেতু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব জানিলে মানে অকমান এই টাৰ্ম কিটাৰ লগত চিনাক্ত হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। পেথেটিক পলিসি কাক কয়, ট্ৰান্সফাৰ এপিটেট কাক কয়, মেটাফিজিক্যাল কনসেপ্ট কাক কয়। মেটাফিজিক্যাল means you can say that beyond the physical, right? So this not it's not totally relatable with physically, right? It's beyond the physical, that's called metaphysical. But I also, just if you know the correct answer, just comment me. Okay, if they be two, they are two, as steep and compasses are two, the soul of pig's foot so. Okay, if you know the correct answer, comment me. I'm waiting here for your answer. Question number 49. Johan, comment jaldi comment kora. Correct answer ki hobo here question number 49 or okay, so here jitu correct answer to hobo hetu hobo tomorrow transfer repeated, ঠিক আছে। So if I am wrong, you can just clarify me, okay? So here correct answer to hobo transfer repeated, that is the correct one answer for this question. Now question number 50, he is not brightest in the world, right? He is not brightest in the world. This statement is an example of what? Metaphor, irony, oxymoron, litotes. So the correct answer is litotes, right? This is the one correct answer for this question. Then question number 51, the man of peeling, Charles Grandson, a sentimental journey. This works fall into which category of novel? That is the sentimental novel. Imane, ঠিক আছে। Now question number 52, identify the group of poets known as Cavalier poets. So Cavalier poets, Robert Herrick, Richard Lovelace, Thomas Carlyle, John Chuckling, right? These all are, yes, exactly, absolutely right, Johan. Here is the correct answer. Robert Herrick, Richard Lovelace, Thomas Carlyle and John Chuckling. So হেতু জানি থব লাগে, কাৰণ যেতিয়া তোমাক সুধিব ইমেজেছ পোয়েট্ৰিৰ লগত কোনকিটা জড়িত নহয়, যদি এইকিটা সোমাই থাকে তেতিয়া তুমি ধুনীয়াকৈ মানে আঁতৰাই পেলাই কুৱেশ্যনটো এনসাৰটো সহজে উলিয়াব পাৰিবা। So here is the question number 53, arrange the sections the wasteland in order in which they appear in the poems. Question number 5, 5 3 1 2 4. Have you read that? Yeah, and 3 second में होगा, right? Then 1 the poet sermon, and that by water what the thunder say. Okay, so ऐसे आपको chronological में arrange करना है, ठीक है। So that term egotistical sublime was coined by, who coined that term egotistical sublime? We all know, that's by John Keats. Okay, so विलियम वुडशॉट ने जो टर्म दिया था वो किया है,
आप जानते हो तो कमेंट करिए। विलियम ब्लेक ने जो टर्म दिया था जानते हो तो कमेंट करिए। जॉन मिल्टन ने जो टर्म दिया था जानते हो तो कमेंट करिए। ठीक আছে। সো জন মিল্টনে কি দিছিলে ট্ৰামটো, তাৰপিছত উইলিয়াম ব্লেকৰ কি প্ৰেছ আছিলে। সো সিহঁতৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰেছ আৰু ট্ৰামকেইটা জানি যাবলৈ হা। ডাৰ্ক সাতানিক মিল্কছ, ঠিক আছে। সো দ্য ডার্ক सैतानिक मिल्क्स बाय विलियम ब्लैक, ठीक है। सो या डार्क सैतानिक मिल्क्स बाय विलियम ब्लैक, ठीक है। डार्क सैतानिक मिल्क्स दैट इज बाय विलियम ब्लैक, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द प्रेरेपेलाइट ब्रादरहुड University which the Rhymer's Club, the Transcendental Poets and the Scottish Sasorian। এতিয়া যোনকেইটা অকমান বুজি পায় ন, এইকেইটা গোটেইখিনি চাব। ইয়াত প্ৰেৰেপেলাইটছ ব্ৰাদাৰহুডত কেইজন মেম্বাৰ আছে গোটেইগাল চেক কৰিব লাগিব। ইউনিভাৰ্চিটি উইজত কিমানখিনি মেম্বাৰ আছে গোটেইগাল চেক কৰিব লাগিব। ৰাইমাৰ্ছ ক্লাবত যিমানখিনি মেম্বাৰ আছে গোটেইখিনি চেক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ট্ৰেনজিশ্যনেল পয়েটছ ইমাত গোটেইখিনি আছে, গোটেইখিনি হুপ্পা চেক কৰি চাব লাগিব। স্কটিছ ছ'চাইটিত যিমান আছে গোটেই হুপ্পা চাব লাগিব, ঠিক আছে। তেতিয়া মানে এনসাৰটো কৰিবলৈ সহজ হয়। সো হেতু এতিয়া ক্ৰনলজিক্যালি এৰেঞ্জ কৰিব লাগে যে দ্য স্কটিছ ছ'চাইটিয়ান নম্বৰ 1 আহিব and the university with the Transcendental Poets, Preleplites Brotherhood and the Rhymer's Club, okay. So next question, now question number 56. Here's the 56. The first comedy of English is Ralph Roister and Roister. That's the first comedy in English, right? So question number 57. Yeah, James George Fraser wrote the Golden Book, right? That's the correct answer. जो आप जानते हैं तो बताइए सिग्मंड फ्रॉइड कौन के टर्म के साथ एसोसिएटेड है, वो ये কোনটো টাৰ্মৰ লগত জড়িত সিগমণ্ড ফ্ৰইড। ঠিক আছে। তাৰপিছৰ মহেশ্বতা দেৱীজ ব্ৰিজ গিভাৰ was translated into English by G.C. Spivak, that means গায়ত্ৰী চক্ৰৱৰ্তী স্পাইভাক, ঠিক আছে। ট্ৰেজেডি বুলি ক'লে জোহান কোনটো ট্ৰেজেডি বুলি ক'লে নাই বুজা মই, কোনটো? তুমি অকমান কোৱেশ্যনটো প্ৰশ্নটো ভালকে লিখাচোন, মানে বুজা নাই মই, হা, ঠিক আছে। তুমি ট্ৰেজেডি বুলি ক'লে কৈছা কোনটো ক'লে, কোনটো ৰেভেন্স ট্ৰেজেডি বুলি ক'লো, কোনটো তুমি লিখাচোন কোনটো ক'লে। Okay, yeah, the first comedy in English, right. So thank you for your clarifying. Yes, exactly. Thank you, Johan. The first comedy in English is the दिमाग उधर उधर पर हो जाता है ना। हम लोग एक यहाँ पर सोचकर अच्छे से बना रहे हैं, व्यूज भी इतना नहीं आ रहे हैं, लोग भी इतना देख नहीं रहा है, हमको क्या करें, है ना, दिमाग उधर उधर भटकती है। सो थैंक यू फॉर योर क्लारिफाइंग दैट। থেংক ইউ বাই। মানে কি কবি আৰু ন, এফালে সেইফালে ভাবিবলগীয়া হয় আজি কি হ'ব, আৰু এইকেইটা মানে এনসাৰটো এনালাইজ কৰোঁতে অকণমান দিগদাৰ হয় ন, নক'বা আৰু। চ' থেংক ইউ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ষ্টৰি অফ গুড অফ স্মল थिंग्स। ओके सा वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट मीना कंदासामी को जरूर पढ़ना, हाँ। वो यूजीसी एग्जाम में 2025 में पूछा गया है, ठीक है। सो सोशितर को भी पढ़ना चाहिए, मीना कंदासामी को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। देन द स्टोरी ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द स्टोरी ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज सेड इन IMNM। सो द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स কোনে লিখিছিলে?
জোহান কমেন্ট কৰা কোনে লিখিছিলে দ্য গুড অফ স্মল থিংছ জলদি পটাপট কমেন্ট কৰা কোনে লিখিছিলে দ্য গুড অফ স্মল থিংছ So, the story of the God of small things is set in IMNM. ইয়াৰ setting to ক'ত হৈছিলে IMNM. Setting মানে কি আৰু মানে বস্তুটো হা যেনে ধৰা মই এতিয়া কৈ আছো যে 1926 চনৰ 15 আগষ্টত দিল্লীত যিবিলাক ঘটনা হৈছিলে সেইবিলাক ঘটনাটো হ'ল দিল্লীতে হৈছে ন So setting to hover delete. So like that মানে here the story of God of small things is set in IMNM. ঠিক আছে? So now let's go to the next question. Here's the next question. T.S. Eliot defense of poetry as okay. So you are asking about Gorbodak, right? So So गोरबोदाक के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं मैं तो यहाँ पर ओके द फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश इन द रेल रो स्टार एंड लो स्टार हाँ यही तो सेलेक्ट किया है कोई बात नहीं क्लैरिफाई कर लेना ठीक है ठीक है सो yes so T.S. Eliot defines poetry so according to T.S. Eliot poetry no turning loss of emotion but escape from emotion not expression of personality but it escape from personality that is the one correct answer option number B okay according to T.S. Eliot defines the poetry so question number 61 who is Adonias of the poem in Adonias ओके जो एक कंफ्यूजन का टॉपिक है तो बाद में देख लेंगे ओके गोरबोदाक को हम सो हु इज द एडोनियस इज ए पोएम ऑफ एडोनियस सो क्वेश्चन नंबर बी जॉन किट्स क्वेश्चन नंबर 62 which of the following novels depicts the plight of the Bangladeshi immigrants in East London the correct answer is Brick Lane So মানে উমানে পোৱা নাযায় কিছুমান হা কৰ পৰা প্ৰশ্নটো সুধিছে এটো তোমাৰ I think that may be related to partition literature right next question number 63 which poet among the group does not so does not Aryan generation group so Aryan generation hetu eta tumar group hoy ha so etos kontu related nohoy alone wise he is not related to this group ঠিক আছে that is the correct one answer for this question number B so question number 64 Hamlet and his problem it is a literary theory and criticism we have read this work Hamlet and his problem famous for its concept of objective correlative ठीक है that is the correct one answer regarding this objective correlative okay Hamlet and his problem right objective correlative ठीक है so the next question number 65 here is the 65 which of this is a fictional town created by R.K. Narayan this is the question number A Malgudi so guys that's very nostalgic for me when I'm preparing for my entrance I remember that things Malgudi is the correct one answer for this question and next question number 66 the narrative technique Kantapura has been adopted from
Okay, that is, if you know guys, please comment me the correct one answer. Okay, the narrative technique of Kantapura has been adopted from what? Okay, so if you know the correct answer, just let me know in the comment section. Yeah, the narrative technique of Kantapura has been adopted from Santala Purana, Yatra, none of the above, and Tamasala. Tamasa. Yeah, if you know the correct answer, you can comment me. ओके, कोई बात नहीं। सो मुझे लगता है उसका करेक्ट आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। होगा तो ये ए होने का चांस लगभग लगभग है 30%, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन जो उसमें महाभारत ऑप्शन नहीं दिया है, महाभारत भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग गाइज, उसको रोक लेने में ही तो अच्छा है दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। What was T.S. Eliot's first working title? Wasteland. What was T.S. Eliot's first working the title of Wasteland? He do, the police different voices. Right, exactly. And next question. Question number 68. Art for artist's sake. Art for artist's sake is rallying cry for the aestheticism. Next question. In Paradise Lost, whose character narrates the story making of Eve from the Adam's rib? Adam. That's the correct one answer. Next question, you guys. Here's the next one, question number 70. So जोहान, बताइए कौन सा करेक्ट लग रहा है क्वेश्चन नंबर 70 में। Who among the following associated with the Irish dramatic movement? Yeah, this also a dramatic movement, Irish dramatic movement. So ऑप्शन नंबर है लेडी ग्रेगरी, W.H. G.M. सिंजे, जोनाथन स्विफ्ट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, जोनाथन स्विफ्ट नहीं होगा, W.H. G.M. सिंजे एंड G.V. शो। तो कौन सा हो? लेकिन WH होगा, यह भी नहीं होगा, कौन सा होगा? या ए इज द करेक्ट आंसर, लेडी ग्रेगरी, WH जेम्स। Thank you Johan for your clarifying that, and you engage here in this live session. So I think that you are a very serious student. Question number 71. Thank you Johan. Question number 71. In defense of poetry, which of the following works Sydney recommended good example of poetry? In which of the following works the Sydney recommended good example of poetry? So उसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए जोहान। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी कुआ यार करेक्ट आंसर तो क्या होगा? In his defense of poetry, which of the following works does Sydney recommend good example of poetry? यार करेक्ट आंसर तो कौन होगा? या कौन होगा? In the defense of poetry, which of the following works does Sydney recommended good example of poetry? Yeah. Okay, so yeah, I will give you the right answer. So जिस भी ऑप्शन में 3 है वो नहीं होगा, हाँ, जिस भी ऑप्शन में 3 है वो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये तो गया ऑप्शन नंबर, ये तो गया। आप 1 और 4 बसा है, 1 और 2 बसा है, उसमें कौन होगा? उसमें कौन होगा? 1 और 2 बसा है, 1 और 4 बसा है। 1 on the mirror of magistrate, the mirror of Scottish king, and the one is the mirror of magistrate and the shepherd's calendar। जिस भी ऑप्शन में 4 है वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तब क्या होगा? 1 and 2 होगा, राइट। So that's why the correct answer is the mirror of magistrate and the shepherd's calendar। टेक्निक भी लगाना पड़ता है, ठीक है।
सो गाइस, ऐसा चीज हमको ना पता नहीं होता, एग्जाम के बाद रोना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए मैं बता रही हूँ, जो सीरियस कैंडिडेट है वो अच्छे से देख लेना। देखिए गाइस, सीरियस नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बाद में कहाँ जाना है जा लेना, हमारे तो कोई बात नहीं। हम ना समझ नहीं पाते हैं ये सब चीज हम क्यों कर रही हैं, मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये सब, यानी आप किसके लिए देख रही हो ये सब, है ना। सो मेरे लिए कर रहा हूँ, आपके लिए भी बना रहा हूँ, आप भी तो लाइक साइक दीजिए, है ना। सो आपका भी तो सपोर्ट चाहिए ना मेरे को। ओके गाइस, सो however leave it, however now come to the point. Okay, so Johan said that I have not yet read the following given in the question. Okay Johan, so question number here, in the defense of poesy, which of the following works does Sydney recommended as a good example of poetry? Yeah, we have already did this question. So question number 72 to 75, that is 10 passages. Okay, जो पैसेज है उसको तो मैं नहीं कराऊंगा, हाँ, उसको पैसेज को करना मुश्किल है, सीधा 76 पे चला जाता हूँ। हाँ, पैसेज को कुछ कर लेना, मैं लिंक पर क्वेश्चन पेपर डालूंगा, ठीक है, दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 76। ओके जोहन, ओके जोहन, समझ गया। सो क्वेश्चन नंबर 76। सो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 76, here is the 76. One second, yeah, that is the 76. So that is talking about in the years literary history 1649 and 1660 known as. What is the correct answer? If you know, in the comment box. Okay, that is the correct answer is what? Option number A, B, C, D. कौन सा वाला हो सकता है, बताइए, 5 सेकेंड में बताइए। 5 4 3 2 1। ओके, कोई बात नहीं, उस ट्राई टू कंप्लीट सेशन बिफोर। ओके जोहान सार बोले ना मत हाँ एक बाई बोले मत। So the years of the history of 1649 and 1660 have known as the Commonwealth period. Okay, then the next question, question number 77, बेसी नहीं आरो just this time. Question number, the gunpowder plot in 1605 was inspired by Blowhouse Common. That is the correct one answer. gunpowder plot को याद रख लीजिएगा, ईयर को 1605। यस, कभी कभी पूछ लेता है, पढ़ने के लिए ना बहुत चीज जिस भी उतार फेंक देता है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है इसलिए। सो क्वेश्चन नंबर 78, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स इज एसोसिएटेड विद द इमेजेस मूवमेंट। मैंने बोला था ना, इमेजेस मूवमेंट में जितने भी राइटर है सबको याद रखना है। ओके, सो द करेक्ट वन इज एजरा पोन, you can directly so Philip Larkin associated it with movement, if you know the correct answer you can let me comment section। R.S. Thomas कौन सा वाला एसोसिएटेड है, वाइल्ड ओवन कौन सा वाला एसोसिएटेड है, उसको पता लगा लेना है, ठीक है, अगले एग्जाम के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 79, shows the correct chronological order, so the Caxton printing press, first in English book, Sotenes Mislensi, songs and sonnets, William Shakespeare first folio, and John Milton Areopagitica. Right? That is the correct one answer. Question number 80. The Nobel Prize in the award in the 2020.
Carrigan is the Lewis Clark. Okay, Johan, C. Okay. So what you talking about C option? I don't know basically. Okay. हाँ समझ गया. So question number 81. Question number 71. A pull-up consisting of a strong level is followed by a weak level is called procy. Right. So question number 82. Who among the following is not a practitioner Jacobian tragedy? So the correct answer is George Villiers. Okay. Question number 83. The error of interpreting literary work referring to evidence of outside itself purposes author called the intentional fallacy. Question number 84. Hamlet and Oedipus, study of the William Shakespeare, written by Ernest Jones. Okay. Next question number 85. Newgate novel is a category of the lives of criminals. Exactly. So, question number, okay Johan, question number 86. According to Matthew Arnold, Touchstone. ইয়াত আপুনি ইমান গুৰাই মুৰাই একো ৰাখিব দৰকাৰ নাই, জাষ্ট টাচস্টোন কিৱৰ্ডটো ৰাখিব লাগে, লাঞ্চ ইজ এক্সপ্ৰেছন অফ গ্ৰেট মাষ্টাৰ্स, बस कहानी खत्म. ठीक है. So an English poet could not help excitement that the historical event caused his lifetime. Bliss ইয়াতো বেছি ৰাখিব দৰকাৰ নাই, হা, জাষ্ট bliss was alive, बस ইমান মনত ৰাখিব লাগে. So the correct answer is what? তুমি জানা যদি এতিয়া কমেন্ট কৰা, হা, ঠিক আছে, তুমি জানা যদি কমেন্ট কৰা, মই তোমাক 50 টকা দিম, ঠিক আছে. So তুমি জানা যদি কমেন্ট কৰা, তোমাক মই 50 টকা দিম. ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কিন্তু হ'ব জলদি কিন্তু 10 সেকেন্ডৰ ভিতৰত 10 9 ভালকে চাই লোৱা, হা, এইটা কাৰেক্ট আনসাৰ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Time is already passed. So here the correct answer is bliss was done. What is the correct answer? Tennyson. Johan ने comment किया, Johan ने दिसे बी बोली. Tennyson जुबली Queen Victoria's reign. होय जानू. Bliss was death of down alive. So that is the word for this France revolution. Okay, that is the correct one answer. If you doubt regarding this question, you can go through this Google. Okay, Johan, C is the correct answer. 88. Who among the following happy ending in King Lear? Happy ending in King Lear, that's written by Nahum Tate. Who is of the following work is not correct? Mulk Rajanon Nectarship, it's not correct. ठीक है. R.K. Narayan Bender Sweet, yes. Rajarao Kantapura, yes. Copper Downs by Kamala Markandeya, yes. जो যেতিয়া মই কমলা মাৰ্কেণ্ড মুলক ৰাজানৰ ৰাজাৰাও R.K. নাৰায়ণ পঢ়ো, সঁচাকে মোৰ মানে মনত আহে, হা, মই মানে কেনেকে পঢ়িছিলো আগতে, একজেক্টলি মোৰ মনত আহে, মানে কি ক'ব. Then the next question number 90. বেছি নাই জোহান, হা, ধৰা বেছি নাই, just 10টা question আছে, remaining 10 question. So arrange the following elegies in English in chronological order. Chronological order arrange কৰিব লাগে. Elegy written in a country are shared. Adonias in memoriam and Tiresias. Right. This order. Next question. After discovering truth about the heinous crimes committed, the first Oedipus punished blindness. बस question तो एचो repeat करिबो ने नकरिबो नाजानो, हाँ, आरो question is also very critical, हाँ. डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ने से सब कुछ होता है, लेकिन बता रहा हूँ. Okay, so question number 92. Find out who is the odd Wallace Stevens. Okay, Wallace Stevens. आपको जो डाउट लगता है ना, उस पर जो डाउट अभी लगता है कमेंट गूगल कर लेना, हाँ. बाकी तो डाउट लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हमने सही किया है, हमारे ऊपर
हाँ भरोसा रखो, हमके अच्छे से बनाया है। क्वेश्चन नंबर 93, onomatopoeia is the word's pronunciation sound just describes. Yes, exactly, onomatopoeia. That's a figure of speech. You need to know about that oxymoron and alliteration, right? Okay. Question number 94, मैचिंग मैचिंग गाइस मैचिंग मैचिंग करने में खेलने में ना बहुत मज़ा आता है, ठीक है। जॉर्जिया तरस द मैन ऑफ मूड, विलियम शार्ली, काउंट्री वाइफ, जॉन वान ब्राफ, प्रोवोक वाइफ, विलियम कुंग्रेव, द डबल डीलर। तो मैचिंग मैचिंग कर खेलने में ना बहुत मज़ा आता है, ठीक है, बहुत मज़ा आता है। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95, so what is the 95? What did Thomas Carlyle mean by the clause by Byron? Open the beauty. Abandon the introspection of romantics, turn higher moral purpose of the beauty. That is the correct answer. Question number 96. The heart of darkness. The heart of darkness presents the two conflicting discourses present. Identify the discourses of the following: anti-colonialism and Eurocentrism. Question number 97. From which of the following list Shaw's work is written by E.M. Forster? That is by A. Rumor One is so. Question number 98. Which of the following awards is not given Indian English writers? What is? So I think that it is, Gyanpit, maybe, but white dress price. So this is also confusing for me. You just Google it. Okay, I would like to say, but I think that the Gyanpit, उसका नहीं तो उसका, ओके, ये दोनों में ही एक होगा। ये तो बिल्कुल नहीं, हाईटेक अकेडमी बुकर प्राइस बिल्कुल नहीं, ठीक है। नॉट गिवन, ओके, नॉट गिवन को फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 99, sorry guys. Question number 98. Who among the following is the credited the making of the first authoritative dictionary of the English language? Correct answer, Dr. Samuel Johnson. Question number 100. Metaphor is so widespread that is often used as the umbrella term to include other figures of speech such as metonyms, which can be technically distinguished from its uses. Umbrella term. So Johan, so thank you so much for watching this video. You know when you started this live session, you also here with me, and now complete our live session. So thank you, Johan. Okay, and have a good day to you, because thank you for your effort, because you share this channel and also watch. Okay, yeah. If you want to say anything, you can say me here. Yeah. So after, thank you so much. Yeah. Thank you so much to you, Johan. Okay. So in the next session, we discuss, different topic, different year PYQ. Okay. So thank you and bye bye. Have a good day. Bye bye, Johan.